Okay, Assalamu alaikum students. So today we are going to start with IGCSE Physics, October November 2022, Paper 4, Variant 1. Paper 4, Variant 1, 1 hour 15 minutes का पेपर है October November 2022. So let's move ahead. Let's zoom in here. ठीक है. Two blocks A and B are joined by a thin thread passing over a frictionless pulley. Block A rests on a rough horizontal surface. ठीक है. ब्लॉक ए जो है वो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट कर रहा है दैट मीन्स व्हाट। इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ब्लॉक ए। यहाँ पे आपकी फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट है। सिंपल। एंड ब्लॉक बी इज हेल्ड एट रेस्ट जस्ट बिलो द पुली। ठीक है, ब्लॉक बी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, ब्लॉक बी इज रिलीज्ड एंड इट फॉल्स वर्टिकली. The thread remains loose until block B has fallen a height of this. The mass of block B is this. Okay. ब्लॉक बी इतनी हाइट फॉल कर रहा है बेटा, एंड द मास ऑफ ब्लॉक बी इज दिस. यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बी एज इट फॉल्स. तो हाउ विल यू कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इजी, एम जी इंटू चेंज इन हाइट. बच्चे मास क्या है? 0.5. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? 9.8. चेंज इन हाइट क्या है? 0.45. कैन यू कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो जी, बिल्कुल. 0.5 इंटू 9.8.45. द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी 2.205 जूल्स. अगर इसको मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ कर दूं तो दिस विल बी 2.2 जूल्स. सिंपल. ठीक है, हमेशा आईजीसीएसई फिजिक्स में आपने जो है वो अपनी वैल्यूज को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना होता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स फर्दर मूव अहेड. द मास ऑफ ब्लॉक ए इज 2 kg. ओके. When the thread tightens, it pulls on block A, which moves to the right at a speed of this. ठीक है. Calculate the impulse exerted on block A as it accelerates from rest to a speed of this. ठीक है. अच्छा, मतलब आपकी इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड 0.6 है. यू हैव टू कैलकुलेट इम्पल्स. बेटा इम्पल्स निकालने का कोई फॉर्मूला याद है? इम्पल्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम किस तरह लिख सकते हैं? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. बेटा मास क्या है? 2 kg. चेंज इन वेलोसिटी किस तरह निकालेंगे? फाइनल है 0.6, इनिशियल है 0. चेंज इन वेलोसिटी 0.6, इम्पल्स क्या आ जाएगा? 1.2 न्यूटन सेकेंड. सिंपल. अब आ जाओ यहाँ पे. Both of the blocks, okay, now both of the blocks are moving at a constant speed of 0.6 meters per second until block B hits the ground and then the thread becomes loose. Okay. Explain the energy changes that take place in block A after block B stops moving. Okay. आपने एनर्जी चेंज बताना है दैट टेक्स प्लेस इन ब्लॉक ए आफ्टर ब्लॉक बी स्टॉप्स मूविंग. भाई ब्लॉक बी अगर मूव करना छोड़ देगा, व्हाट विल बी द चेंजेस इन ब्लॉक ए? एनर्जी चेंजेस की बात हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ ब्लॉक बी स्टॉप्स मूविंग व्हाट विल हैपन? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, या इस तरह लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए क्या कर जाएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी. इट विल ऑल्सो स्लो डाउन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए डिक्रीजेस. और क्या आप रियलाइज कर सकते हो कि ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन लग रही थी? सो द काइनेटिक एनर्जी का लॉस विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. और यू कैन से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए डिक्रीजेस as thermal energy is produced due to friction. As thermal energy is produced ड्यू टू फ्रिक्शन. बेटा हो क्या रहा है?
आपकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू थर्मल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे? दिस लोअर्स द स्पीड ऑफ ब्लॉक ए। परफेक्ट, इजी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। क्या लिखा हुआ है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्टेट टू फीचर्स ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा वेक्टर क्वांटिटी के दो फीचर्स क्या होते हैं? इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड इट हैज अ डायरेक्शन। Perfect. It has a magnitude and it has a direction. State two other quantities that are vectors. हमने दो और vector quantities बतानी है. You can say displacement is also a vector quantity. What else is a vector quantity, beta? Acceleration के दो. Acceleration is also a vector quantity. आगे बढ़ते हैं. A student suspends a spring from a clamp stand and measures the length L naught of the spring. अच्छा जी, आप L naught measure कर रहे हो of the spring, ठीक है? The student then suspends loads of different weights from the spring and measures the length of the spring for each load. अच्छा जी, आप डिफरेंट डिफरेंट लोड लगाते जा रहे हो यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट, पहले वन लगाया फिर टू थ्री, इस तरह लोड लगा रहे हो और लेंथ मेजर कर रहे हो। परफेक्ट। He then plots, okay, he then plots a graph of length of the spring against weight. अच्छा जी, लेंथ वर्सेस वेट का ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। फिगर 2.2 इज द ग्राफ दैट द स्टूडेंट प्लॉट्स। अच्छा, ये वो ग्राफ है जो स्टूडेंट प्लॉट कर रहे हो। ओके, यूज फिगर 2.2 to determine the initial length L naught of the spring. बेटा how will you determine the initial length L naught of the spring? Always remember L naught was the length जब आपकी फोर्स क्या थी? 0 न्यूटन। बच्चे जब आपकी फोर्स 0 न्यूटन थी या जब आपने कोई भी लोड नहीं लगाया हुआ था, देन योर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वाज एल नॉट। क्या आप यहाँ पे एल नॉट निकाल सकते हो? जी बेटा, ये रही है एल नॉट की वैल्यू। नाउ सर, ये किसके इक्वल होगा? इफ यू रियलाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेस किसके इक्वल है? 10 बॉक्सेस आर इक्वल टू 0.2 मीटर। वन बॉक्स किसके इक्वल होगा? 0.02 मीटर्स के इक्वल होगा। तो ये एल नॉट किसके इक्वल आ जाएगी? 0.12 मीटर, बिकॉज वी आर 6 मीटर्स ऑन द, या 6 बॉक्सेस ऑन द वाई एक्सिस। एल नॉट कम्स आउट टू बी 0.12 मीटर। स्केल रीडिंग भी मैंने आप लोगों को सिखा दी, आई होप थोड़ी सी समझ आई होगी। State what is meant by limit of proportionality and using figure 2.2 determine the weight of the load that causes the spring just to reach the limit of proportionality. First of all तो हमने बताना है limit of proportionality होती क्या है। Limit of proportionality is the point where extension stops being proportional to load. बेटा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका हुक्स लॉ अप्लाई होना खत्म हो जाता है। Limit of proportionality is that point at which Hooke's law stop being obeyed. या आप इस तरह कह सकते हो कि limit of proportionality is the point where extension stops being directly proportional to the load. तो ये लिख लो, limit of proportionality is the point where extension stops being directly proportional to the load. Now we have to find this point on the graph. अब हमने ये point find करना है on the graph. How will we do that? The most simple thing that you can do is कि आप एक ruler ले लो, अपना scale ले लो और एक straight line ruler से align करने की कोशिश करो. You take a ruler and align it with this straight line like this. Simple. Try to align it as much as possible. आप एक ruler ले लो और उसको इस straight line के साथ अलाइन करना शुरू करो, somewhat like this. Let me make a better diagram. Yeah, take a ruler and try to align it with this line already given in the graph like this. ठीक है, इसको zoom in करते हैं so that we can picture perfect this. ठीक है, अब इसको यहाँ पे ले आओ
And yeah, like this. Perfect. Can you realize this ruler or this line stops aligning with the ग्राफ जो आप रूलर लोगे जो आप स्केल लोगे वो आपकी लाइन के साथ जहाँ पे अलाइन करना छोड़ दे या द पॉइंट वेयर द रूलर स्टॉप्स अलाइनिंग विद द लाइन is your limit of proportionality probably this point. After this point if I extend this line chalo let me show you. After this point if I extend this line can you see the line and the graph are diverging. बेटा आपकी स्केल से जो है वो लाइन अलाइन करना छोड़ देगी आफ्टर दिस पॉइंट सो दैट इज योर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. लेट मी डू वन थिंग या limit of proportionality is this. If I bring it downward ये कितना लोड हो गया 10.8. Perfect. At a weight of 10.8 Newton you reach the limit of proportionality. So let's write that down. Okay, now you have to calculate the spring constant I think. हाँ जी हमने spring constant निकालना है. Use figure 2.2 to determine the spring constant of the spring. How will you do that? Okay, so now you have to determine the spring constant of the spring. How will you determine the spring constant of the spring? Very very easy बेटा. आपने इस ग्राफ पे जाना है और दो पॉइंट्स लोकेट करने हैं इन द लीनियर रीजन. बेटा लीनियर रीजन में दो पॉइंट्स ले लो. लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट 0,0.12 और सेकंड पॉइंट आप ये ले लो. दैट इज लेट मी जूम इन अ बिट. सेकंड पॉइंट आप ये भी ले सकते हो या एक काम करो आप बेटर पॉइंट ये वाला पॉइंट ले लो. द सेकंड पॉइंट कैन बी दिस पॉइंट. एक्स एक्सिस में 9 वाई एक्सिस में 0.5. नाउ सर हाउ टू कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट. बेटा कैन यू सी लेंथ इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस force is plotted on the x axis. So always remember the gradient of length versus फोर्स का ग्राफ अगर लेंथ वाई एक्सिस पे है फोर्स एक्स एक्सिस पे है इस ग्राफ का ग्रेडियंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1/k. ये की पॉइंट लिख लो बेटा. आइदर द ग्रेडियंट ऑफ लेंथ वर्सेस फोर्स या फिर अगर आपने एक्सटेंशन वाई एक्सिस पे प्लॉट की हुई है फोर्स एक्स एक्सिस पे प्लॉट की हुई है देन टू योर ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू 1/k. ठीक है. अगर कभी भी आपने लेंथ या फिर एक्सटेंशन वाई एक्सिस पे प्लॉट की हुई है योर ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू 1/k. तो यहाँ पे लेट्स ब्रिंग दिस डाउन 0,0.12 and 9,0.5. I guess I have copied the points correctly. Yep. Calculate the gradient. Gradient is equals to y2 minus y1 x2 minus x1. What does the gradient comes out to be beta? Gradient comes out to be 0.042. अब ये gradient किसके equal है? This gradient is equals to 1/k as I have told you earlier. 1 divided by 0.042 is equals to your k. बच्चे k की वैल्यू निकालो क्या आती है. द वैल्यू ऑफ k comes out to be what? 23.68. If I round it off till two significant figures, 24 Newton meter is your value of k. 24 Newton meter बच्चे वैल्यू ऑफ k आ गई आपके पास. आगे बढ़ते हैं. A rock climber of total mass कितना है 62 kg. okay. Holds herself in horizontal equilibrium against a vertical cliff. She pulls on a rope that is fixed at the top of the cliff and presses her against the cliff. Okay. Calculate the total weight of the climber. You have to calculate the total weight of the climber. How will you do that? Very easy. The mass of the climber is 62 kg. How will you calculate weight? mg. Mass is 62 into 9.8. बताओ आंसर क्या आ जाएगा.
हाँ जी 62 × 9.8 बताओ आंसर क्या आ जाएगा. द आंसर कम्स आउट टू बी 607.6. If I round it off to two significant figures, 610 Newton is your answer of weight. Nothing complicated here. Say two conditions needed for equilibrium. What are the two conditions needed for equilibrium? Resultant force must be equal to 0 and resultant moment must be equal to 0. ठीक हो गया. The climber's center of mass is 0.89 meters from the cliff. Calculate the moment about her feet due to her weight. अच्छा जी. देखो क्लाइंबर का सेंटर ऑफ मास ये रहा और सारा का सारा वेट कहाँ से एक्ट करेगा. सेंटर ऑफ मास से एक्ट करेगा. दैट इज 610 न्यूटन. अब मुझे बताओ आपने उसकी फीट को अगर पिवट बना लिया है व्हाट विल बी द मोमेंट हेयर. मोमेंट क्या जनरेट होगा. कैन यू रियलाइज अगर उसकी फीट पिवट है वेट 610 न्यूटन है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फीट टू द वेट. दिस डिस्टेंस इज 0.9 meters. कैन यू कैलकुलेट दिस मोमेंट. ये मोमेंट निकाल सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. यस. फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स क्या है 610. डिस्टेंस क्या है 0.9. बताओ भाई क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आ रहा है. 610 × 0.9 क्लॉकवाइज मोमेंट 549 Newton meter is your clockwise moment. इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कर दोगे तो 550 Newton meter हो जाएगा. नाउ वन थिंग जिसके मुझे कमेंट्स आएंगे नीचे मुझे पता है कि सर आपके आंसर्स मार्किंग स्कीम से मैच नहीं कर रहे. द ओनली रीज़न कि मार्किंग स्कीम से आंसर्स मैच नहीं करेंगे थोड़े से ऑफ होंगे. द रीज़न इज़ कि हमने ग्रेविटेशन फील्ड से 9.8 लिए. दिस इज़ अ वेरी ओल्ड पेपर. ठीक है. प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स में ये ना कहना कि सर गलत कर रहे हैं. ये बहुत पुराना पेपर है बच्चे. 2022 का पेपर है. इस वाले पेपर्स में हम ग्रेविटेशन फील्ड से 10 लिया करते थे. पर 2005 में 24 में 23 में एक नया रूल आया है कैम्ब्रिज की तरफ से कि ग्रेविटेशन फील्ड से 9.8 लेनी है. दैट्स वाई ये आंसर थोड़े थोड़े जो है वो ऑफ हो सकते हैं. नाउ द लाइन ऑफ rope meets the horizontal line above through her center of mass at a distance of 1.2 meter from the cliff as shown in figure 3.1. The rope is at an angle of 60 degree to the horizontal. You have to calculate the tension in the rope. आपने टेंशन इन द rope निकालनी है. हाउ विल यू डू दैट. बेटा रोप के अंदर जो टेंशन है लेट्स से दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स. ये हो जाएगा टी साइन 60 और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा. वन सेकेंड लेट मी मार्क इट इन ग्रीन. ये वाला कंपोनेंट बच्चे क्या हो जाएगा. हाँ जी टेंशन दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो सकती है ना. ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कोसाइन 60. Can you realize t cosine 60 is passing through the pivot? It will generate a moment of 0. T sine 60 will generate an anti-clockwise moment. ये क्या हो जाएगा. T sine 60 multiplied by the distance from the feet to the tension that is 1.2. Perfect. अब हम क्या करेंगे सर. Now we will say anti-clockwise moment is equals to clockwise moment. Anti-clockwise क्या था. T sine 60 into 1.2 clockwise moment क्या था बेटा 550. Can you calculate the tension. 550 divided by 1.2 sine of 60. बताओ आंसर क्या आ रहा है बच्चों. 550 divided by 1.2 sine of 60. Your answer comes out to be 530 Newton according to two significant figures. आगे बढ़ते हैं. A quantity of gas is trapped by a piston in a cylinder with thin walls. Okay. The piston is free to move without friction within the cylinder. Okay. Figure 4.1 shows the cylinder and the piston. ठीक है cylinder है ये piston है.
The cylinder is placed inside a freezer, okay. The air in the freezer is at the atmospheric pressure of this. The area of the piston in contact with the freezer is this. ठीक है, ये pressure आ गया, ये area आ गया. You have to calculate the force. Pressure is equals to force over area. Pressure into area is equals to your force. बच्चे pressure क्या है? 1 into 10 raised to the power of 5. Area क्या है? 2.4 into 10 raised to the power of minus 3. बताओ फोर्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, कैलकुलेट कर लेते हैं. Let's do the calculations. The force comes out to be 240 Newton is equals to your force. When the cylinder is first placed into the freezer, the temperature of the gas in the cylinder decreases and the air pushes the piston into the cylinder. ठीक है. Calculate the work done on the piston by the air in the freezer as the air pushes the piston a distance of this. Work done किस तरह निकालते हैं? Force into distance. फोर्स निकाल चुके हो 240. डिस्टेंस क्या है? 0.021. कैन यू कैलकुलेट द वर्क डन? यस सर. किस तरह आएगा वर्क डन? वर्क डन कम्स आउट टू बी 5.04 जूल्स अकॉर्डिंग टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. 5.02 5.0 जूल्स ही हो जाएगा, ठीक है. टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ये 5 जूल्स या 5.0 जूल्स ही हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी. ओके, द इनिशियल टेम्परेचर of the cylinder is 21 degrees centigrade and the final temperature is this. The heat capacity, this has been excluded from syllabus. बेटा याद रखो, ये हीट कैपेसिटी जो है वो सिलेबस से निकल चुकी है. हाउएवर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज स्टिल इन सिलेबस. हाउएवर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्टिल इन सिलेबस, अभी भी सिलेबस में. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. Acha, when the temperature reaches negative 18 degrees centigrade, the pressure of the gas in the cylinder is still equal to that of the atmospheric pressure. अच्छा जी, एग्जामिनर कह रहा है कि जब आपका टेम्परेचर नेगेटिव 18 हो गया है फिर भी प्रेशर किसके इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गैस हाउ द प्रेशर रिमेन्स इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू. अब देखो हो क्या रहा है, बहुत ही गौर से देखो हो क्या रहा है. When the piston is first placed into the freezer, temperature decreases and the air pushes the piston into the cylinder. बेटा जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? ये पिस्टन अंदर की तरफ मूव करता जा रहा है. जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, योर पिस्टन इज मूविंग इनवर्ड. अब आप कहोगे सर, अगर पिस्टन इनवर्ड मूव कर रहा है इसका तो एक मतलब है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे, हेंस प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए. है ना, ये फर्स्ट थॉट आती है दिमाग में. बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हो रही है. एज टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कम हो रही है, कोलिजन्स आपकी कम होंगी बेटा, प्रेशर आपका कम होगा. वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर की डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर कम हो रहा है. बोथ फैक्टर्स कैंसल आउट, प्रेशर रिमेन्स एट द सेम वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बात समझ आई? सो हाउ विल यू राइट इट? You will say as volume reduces, yeah, as volume decreases, as volume decreases, the particles collide more frequently. The particles, the particles collide more frequently कह लो, more often कह लो. What will be your second key point? As temperature decreases, क्या कहोगे? The particles lose kinetic energy, या the particles have less velocity. The particles have less velocity and collide less often.
have less velocity and collide less often. इन दोनों फैक्टर्स को मिलाएंगे तो क्या होगा? The two effects cancel out each other and the pressure remains unchanged. The two effects cancel out each other and pressure remains same. Perfect. आगे बढ़ते हैं बेटा. अच्छा, as the temperature of the metal cylinder decreases, the volume of the metal decreases. ठीक है. The decrease in volume of the metal is much less than the decrease in volume of the gas. अच्छा, कह रहा है कि बेसिकली सॉलिड के वॉल्यूम में जो डिक्रीज आ रहा है वो मच मच लेस है कंपेयर टू द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस. Explain in terms of particles of the metal why the decrease in volume of the metal is less than that of the gas. हमने बताना है कि सॉलिड के अंदर इतना ज़्यादा डिक्रीज इन वॉल्यूम क्यों नहीं आया. Because for a solid, molecules or particles are close together, attractive forces between the two particles are very large. So you will say in a solid, in a solid, the particles are much closer, hence the particles are much closer than gas. Hence the attractive forces are much stronger. बेटा, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं. That's why the attractive forces between the two particles is much greater. The attractive forces are much greater between the particles. Between the particles. Simple. आगे बढ़ते हैं शहजादो. Let's move ahead. Figure 5.1 shows a heater in a bathroom. Okay, so you have a heater here. The heater is at a high temperature and it glows red. The manufacturer states the heater emits light and radiation and it transfers thermal energy by radiation. State the part of electromagnetic spectrum that transfers thermal energy. अच्छा जी, भाई कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेज हैं जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करती हैं? इंफ्रा रेड रेडिएशन. परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. State one way in which visible light and the radiation identified in A are similar. Visible light or infrared radiation similar क्यों है? Because both of them belong to the electromagnetic spectrum. Both of them belong to the electromagnetic spectrum. Simple. अब आगे बढ़ते हैं बेटा. One way in which visible light differs from the radiation in A. बेटा विजिबल लाइट इंफ्रारेड से किस तरह डिफर करती है? इंफ्रारेड रेडिएशन हैव अ हायर वेवलेंथ या हैज अ हायर वेवलेंथ हैज अ हायर वेवलेंथ कंपेयर टू विजिबल लाइट. आगे बढ़ते हैं बेटा. Some surfaces are better emitters at emitting radiation than others. Describe an experiment to show whether a black surface or a white surface is a better emitter of radiation. You may draw a diagram if you need. तो आपने क्या करना है? You have to take two containers. आपने दो कंटेनर्स ले लेने हैं. एक को आपने ब्लैक पेंट कर दिया, दूसरे को आपने वाइट पेंट कर देना है. ठीक है, आपने दो कंटेनर्स ले लेने हैं बेटा. वन ब्लैक, वन वाइट. एंड ब्लैक वाले को भी हम सही बना देते हैं. चलो, लेट्स मेक श्योर कि ब्लैक वाला कंटेनर इज ऑल्सो मेड ज्योमेट्रिकली करेक्ट.
अच्छा जी, दो कंटेनर्स आपने बना लिए, उसके बाद आपने क्या करना है? या ऑलमोस्ट सेम टाइप के कंटेनर्स हैं, सेम साइज के कंटेनर्स हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? यू हैव टू प्लेस अ थर्मोमीटर इन बोथ ऑफ देम। आपने दोनों के अंदर एक थर्मोमीटर प्लेस कर देना है। थर्मोमीटर प्लेस करने के बाद दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट में हॉट वाटर भर देना है। बेटा थर्मामीटर प्लेस करने के बाद क्या करना है? दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर प्लेस कर देना है और देख लेना है किस कंटेनर में टेम्परेचर सबसे जल्दी ड्रॉप हो रहा है। द कंटेनर इन विच देयर इज अ ग्रेटर टेम्परेचर ड्रॉप इज अ बेटर एमिटर ऑफ हीट। ठीक है, अब जरा इसको लिख भी लेते हैं। इसको, डायग्राम तो हमने बना दी। विल से प्लेस equal amount of warm water। बेटा इक्वल अमाउंट ऑफ वार्म वाटर प्लेस करना है। प्लेस इक्वल अमाउंट ऑफ वार्म वाटर एट द सेम इनिशियल टेम्परेचर। अच्छा जी, वार्म वाटर का इनिशियल टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। अगर ब्लैक में आप वार्म वाटर प्लेस कर रहे हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड का वार्म वाटर होना चाहिए। प्लेस इक्वल अमाउंट ऑफ वार्म वाटर एट सेम इनिशियल टेम्परेचर inside the containers, इनसाइड द कंटेनर। उसके बाद आपने लिखना है मेजर द टेम्परेचर change। measure the temperature change, or you can say measure the temperature decrease, measure the temperature decrease using the thermometers, using using the thermometers। भाई आपने टेम्परेचर डिक्रीज मेजर करना है यूजिंग द थर्मामीटर। उसके बाद क्या करेंगे? You have to measure the temperature decrease using the thermometer. Then what will you do? The better emitter of heat causes a large temperature drop। भाई जो भी better emitter of heat होगा that will cause a large temperature drop। सिंपल। आगे बढ़ते हैं बेटा। To ensure that the conclusion reached in experiment C part 1 is correct, several details of the experiment must be identical when testing the two different surfaces। कौन सी चीज़ें आइडेंटिकल होनी चाहिए? इनिशियल temperature of warm water that is placed in both the containers, initial temperature of water, and second क्या चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए? वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कांस्टेंट होनी चाहिए एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर कांस्टेंट होना चाहिए। लेट्स further move ahead। स्टेट व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट कौन सी होती है बेटा? लाइट ऑफ अ सिंगल frequency is known as monochromatic light। The red light from the laser hits the curved surface of a semicircular transparent plastic block at P, passes into the plastic। The red light travels through the plastic and hits the surface edge of the block at its midpoint। ठीक है भाई, यहाँ पे midpoint पे आप hit कर रहे हो। Figure 6.1 shows some of the light is reflected and that some light travels in the air along the straight edge of the plastic block। अच्छा जी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, कुछ लाइट प्लास्टिक ब्लॉक के अलोंग ट्रैवल कर रही है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई 3 × 10⁻⁸ ओके।
Explain why the red light does not change direction as it enters the plastic block. भाई रेड लाइट डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज करती एज इट एंटर्स द प्लास्टिक ब्लॉक? कैन यू रियलाइज द रेड लाइट इज पैरेलल टू द नॉर्मल? या रेड लाइट is traveling along the normal, angle of incidence becomes zero. Hence, all the wave fronts hit the plastic at the same time. You can say the red light hits the hits the, या इस तरह कह सकते हो कि the red light is traveling along the normal, along the normal. Hence, angle of incidence becomes what? Hence, angle of incidence is zero, causing what? Hence, angle of incidence is zero, causing what? The red light is traveling along the normal, hence, angle of incidence is zero, causing all the wavefronts, all the wavefronts, all the wavefronts of red light to hit the plastic at the same time. At the same time. Simple. At point M, the angle between the red light and the plastic and the normal is 37 degree. Calculate the speed of the red light in the plastic. आपने स्पीड ऑफ रेड लाइट निकालनी है इन प्लास्टिक. कैसे निकालोगे? हाँ जी, आपने स्पीड ऑफ रेड लाइट निकालनी है इन द प्लास्टिक. हाउ विल यू डू दैट? एनी आइडियाज जीनियसेस? First of all, can you realize this angle of 37 degree is your critical angle? क्यों ये critical angle है? Because at this angle, your refracted ray becomes parallel to the surface. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है. बेटा ये जो 37 डिग्री का एंगल है, दैट इज योर क्रिटिकल एंगल, बिकॉज एट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. सो आप क्या करोगे? योर क्रिटिकल एंगल इज 37 डिग्री. Can you calculate the refractive index of the plastic block? जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं. 1/sin of 37. निकालो भाई refractive index of the plastic block. 1 divided by sin of 37, refractive index of the plastic block comes out to be 1.66. Simple. ये आ गया refractive index of the plastic block. अब आपने क्या करना है बेटा? व्हाट डू यू हैव टू डू नेक्स्ट? हाँ जी, अब क्या करोगे? अब आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला हुआ करता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट ऑब्जेक्ट. अच्छा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक क्या है? 1.66. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या है? 3 × 10⁸. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन प्लास्टिक निकाल लोगे जी? बिल्कुल. 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.66. बताओ भाई, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन प्लास्टिक क्या आ रही है? शाबाश बेटा, बताओ ये क्या आंसर आ रहा है? दिस आंसर कम्स आउट टू बी 1.8 10⁸ meters per second. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन प्लास्टिक किसके इक्वल आ रही है? 1.8 10⁸. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. इन प्लास्टिक, ब्लू लाइट ट्रैवल्स स्लाइटली स्लोअर देन रेड लाइट. अच्छा जी, ब्लू लाइट क्या कर रही है? स्लाइटली स्लोअर ट्रैवल कर रही है देन द रेड लाइट. सो दैट द क्रिटिकल एंगल ऑफ ब्लू लाइट इज स्मॉलर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड लाइट. ब्लू लाइट का क्रिटिकल एंगल इज लेस देन दैट ऑफ द रेड लाइट. अच्छा, देखो रेड लाइट का क्रिटिकल एंगल बेटा क्या था? रेड लाइट का क्रिटिकल एंगल क्या था? 37 डिग्री. ओके, तो ब्लू लाइट का क्रिटिकल एंगल इज लेस देन दैट, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं.
The critical angle of blue light is less than the critical angle of red light. और critical angle of red light क्या है भाई? Critical angle of red light is 37 degree. Perfect. The laser that emits the red light is replaced by one that emits blue light. Now the blue light enters the block at P, hits the straight edge at M. State what happens to the blue light after it hits the straight edge at M. देखो अगर आपकी ब्लू लाइट स्ट्रेट एज एट एम को हिट कर रही है मतलब ब्लू लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है 37 डिग्री. This 37 degree का angle of incidence is greater than the critical angle of blue light. सर आपको कैसे पता चला 37 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ब्लू लाइट? क्योंकि एग्जामिनर ये बात मुझे बता चुका है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ ब्लू लाइट इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड लाइट, है ना? और रेड लाइट का क्रिटिकल एंगल क्या था? 37 डिग्री. ठीक है, रेड लाइट का क्रिटिकल एंगल था 37 डिग्री. अब अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 37 हो गया है तो वो तो ब्लू लाइट के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है. अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? If your angle of incidence is greater than the critical angle, this means what? This means total internal reflection होने वाली है. If your angle of incidence is greater than the critical angle, इसका मतलब क्या है? Total internal reflection होगी of blue light. So first of all, you will say the critical angle of blue light is less than 37 degrees. ठीक है, since angle of incidence is 37 degree greater than critical angle, hence total internal reflection occurs. Hence total internal reflection occurs. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. क्या लिखा हुआ है? द इलेक्ट्रिकल स्टार्टर मोटर इन अ कार इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ यूजिंग अ रिले. ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल स्टार्टर मोटर को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं यूजिंग अ रिले. द रिले कंसिस्ट ऑफ अ प्लास्टिक केस, ओके, एंड टू फ्लेक्सिबल springy strips, okay, X and Y, which are made of soft iron. The iron strips acts as a switch when a circuit is connected between the terminals W and Z. ठीक है. फिगर 7.1 shows एक्स वाई एंड द प्लास्टिक केस. अच्छा जी, ये एक्स वाई आ गया, प्लास्टिक स्ट्रिप आ गई. ओके, परफेक्ट. फिगर 7.2 shows the equipment from figure 7.1 inside a magnetizing coil. ओके, मैग्नेटाइजिंग कॉइल के अंदर प्लेस कर दिया ये. The magnetizing coil is in series with a 12-volt car battery and the switch which is open. Perfect. The switch is closed. State what happens to the iron springy iron strips X and Y. अच्छा जी, जब आप स्विच क्लोज करोगे तो क्या होगा? हाँ जी, जब आप स्ट्रिप्स क्लोज करोगे, सॉरी, जब आप स्विच क्लोज करोगे, व्हाट विल हैपन? द स्प्रिंगी स्ट्रिप्स विल बिकम मैग्नेटाइज्ड. ठीक है, द स्प्रिंगी स्ट्रिप्स विल बिकम मैग्नेटाइज्ड. ठीक है, स्प्रिंगी स्ट्रिप्स मैग्नेटाइज हो जाएंगी एंड सिंस दे आर मेड ऑफ आयरन, एक्स एंड वाई विल हैव ऑपोजिट पोल्स. अगर ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा. देखो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? एज यू क्लोज द स्विच द स्प्रिंगी स्ट्रिप्स गेट मैग्नेटाइज. सिंस दे आर मेड ऑफ आयरन, एक्स एंड वाई विल get opposite poles. Since they have opposite poles, they will attract each other and the switch will
close, and the circuit will close, switch will close, whatever you want to write. Okay. Now you can start writing this answer. You will say, as the switch is closed, what will happen? हाँ जी, क्या होगा? Springy iron strips get magnetized. ठीक है, springy iron strips get magnetized. What will be your second key point, beta? Since the strips are made of iron, X and Y gain opposite poles. X and Y के पास क्या आ जाते हैं? Opposite poles. फिर क्या होगा? X and Y attract each other and complete the circuit. X and Y attract each other and complete the circuit. And complete the circuit. आगे बढ़ते बेटा. The power of the starter motor is this. अच्छा जी, ये power आ गई. You have to calculate the current in the starter motor. Power is equals to IV. Power 1.8 into 10 is the power of 3 लिख दिया हमने क्योंकि किलो था. करंट हमने निकालना है. वोल्टेज क्या है बेटा? Voltage is 12. You can place it here. Can you calculate the current? 1.810 is the power of 3 divided by 12. बताओ करंट की वैल्यू क्या आ गई बेटे? 1.810 is the power of 3 divided by 12. बताओ करंट की वैल्यू comes out to be 150 ampere. Simple as that. Nothing complicated here. The starter motor circuit is connected between terminals W and Z. Perfect. Explain why copper wires with a large cross-sectional area are used for the circuit. बेटा copper wires with large cross-sectional area क्यों use कर रहे हैं? Because do you remember resistance is inversely proportional to area. Area बढ़ेगा तो resistance कम हो जाएगी. Resistance कम हो जाएगी तो what will happen? Less thermal energy will be lost. ठीक है, लेस थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस होगी. या फिर आप ये कह सकते हो कि लार्जर करंट ड्रॉ होगा इन द सर्किट. ओके, यू कैन से सिंस एरिया, पूरा लिख दो, एरिया इज इनवर्सली proportional to resistance. As area increases, the resistance decreases. What will happen further? Hence, less thermal energy is lost. Less thermal energy is lost. Perfect. आगे बढ़ते हैं. The springy iron strips X and Y act as a switch for the starter motor circuit. Complete the circuit diagram for the motor circuit. अच्छा जी, सर्किट डायग्राम किस तरह कंप्लीट करेंगे? इस W को आपने अटैच कर देना है यहाँ से. देन यू हैव टू डू व्हाट? हाँ जी, फिर आपने मोटर के साथ ही नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दिया. ये आपने यूज Z से अटैच कर दिया. दिस कंप्लीट योर सर्किट. सिंपल सर्किट डायग्राम. आगे बढ़ते हैं. The units of two electrical quantities, electromotive force and potential difference, is the volts. State one other similarity between EMF and potential difference. EMF और potential difference में एक और similarity क्या है बेटा? Both have the same equation, work done per unit charge. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो both equal work done per unit charge. ठीक है. State one difference between EMF and potential difference. EMF is work done per unit charge to move the charge across the complete circuit.
However, potential difference क्या है? Work done per unit charge in moving a charge across a component. So you can say EMF applies to the whole circuit, whereas potential difference, whereas potential difference is specific to a component. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. A battery consists of four cells. Each cell has a EMF of this. Calculate the EMF of the battery. 1.2 into 4. This comes out to be 4.8 volts. EMF क्या आ गया? 4.8. Perfect. The battery is connected in a circuit with four 12 ohm resistors. Figure 8.1 is the circuit diagram. अच्छा जी, ये भी 12 ohm है, ये भी 12 ohm है, ये भी 12 ohm है, ये भी 12 ohm है. You have to calculate the total resistance of this arrangement. कैसे निकालोगे? 12 12 क्या है? सीरीज में है. So let's say this is 4.8. मैंने चारों सेल्स को कंबाइन कर दिया है. This is 12 ohm. This is 24 ohms. And you will have a 12 ohm in parallel like this. अब हम क्या करेंगे? Can you realize this 24 ohm and 12 ohm are in parallel? 1 over 24 plus 1 over 12 is equals to 1 over RT. निकालो जरा टोटल रेजिस्टेंस क्या आती है बेटा? 1 over 24 plus 1 over 12. 1 divided by answer 8 ohm आ गई. The total resistance in parallel comes out to be 8 ohms. अब सर्किट किस तरह से बन जाएगा? Somewhat like this. This is 4.8 volts. This is 8 ohms. This is 12 ohms. ठीक है. अब मुझे बताओ यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस किस तरह निकालोगे? 8 plus 12, that is 20 ohms is here total resistance. Simple. Determine the reading on the voltmeter. How will you do that? Do you remember the voltage divider rule? Voltage across any resistor can be calculated using this formula. Resistance of that resistor divided by the total resistance multiplied by the total voltage. Resistor की resistance क्या है? 12. Total resistance क्या है? 20. Total voltage क्या है बेटा? 4.8. Can you calculate the voltage across the voltmeter? जी sir. This comes out to be 2.9 volts according to two significant figures. आगे बढ़ते हैं बेटा. Only one isotope of gold occurs naturally on Earth. Okay. State what this indicates about the nuclear structure of all the naturally occurring isotopes of gold on Earth. बेटा गोल्ड का सिर्फ एक ही तरह का आइसोटोप है जो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है. स्टेट व्हाट दिस टेल्स अस अबाउट ऑल द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ गोल्ड. क्या बता सकते हैं हम? दे ऑल हैव द सिमिलर number of neutrons, yeah, the same number of neutrons. They all have same number of neutrons. Simple. आगे बढ़ते हैं. There are several artificially produced isotopes of gold. ठीक है. Gold 19879 is an artificial isotope which is used in medicine in scientific research. Gold 198 decays by beta emission to a stable isotope of mercury. Calculate the number of protons and the number of neutrons in the nucleus of this isotope of mercury. तो बेटा लेट से आपके पास एक गोल्ड का आइसोटोप है इस तरह से. दिस इज डिकेइंग बाय बीटा एमिशन. क्या होगा? मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड. प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1. दिस इज मर्क्यूरी का न्यूक्लियस एंड 1 बीटा पार्टिकल. मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 80. Can you realize the bottom number is the number of proton that comes out to be what? 80. How will you calculate the number of neutrons? 198 minus 80. This comes out to be what?
198 माइनस 80, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आगे, 118। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। A sample of gold 198 is placed near to a radiation detector in a research laboratory. The count rate is recorded at the same time every day for 32 days. अच्छा जी, आप count rate record कर रहे हो every day for 32 days. Perfect. The results are used to plot the graph shown in figure 9.1. अच्छा जी, आपका ग्राफ आ गया. ओके. Use figure 9.1 to determine the background count rate in the research laboratory. Background count rate क्या होगा बेटा? बैकग्राउंड काउंट रेट वो काउंट रेट होगा, ये, द थिंग दैट इज बिकमिंग कांस्टेंट एट द एंड इज योर बैकग्राउंड काउंट रेट. अब ये कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा जूम इन करेंगे. द बैकग्राउंड काउंट रेट इज दिस टू बॉक्सेस. अब सर आपको कैसे पता चलेगा ये टू बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैन यू रियलाइज यू आर गोइंग फ्रॉम 0 to 100, 100 यूनिट्स कवर कर रहे हो इन हाउ मेनी बॉक्सेस? 10 बॉक्सेस. वन बॉक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? 10 यूनिट्स. ये हो गया 20. बैकग्राउंड काउंट रेट क्या हो जाएगा? 20. नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ गोल्ड 198. कैसे डिटरमाइन करोगे? इनिशियली कैन यू रियलाइज व्हाट इज द काउंट रेट? 390. परफेक्ट. 390 में से बैकग्राउंड काउंट रेट निकाल दो, दैट इज 370. 370 हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा? हाँ जी, 370 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 185. इसमें बैकग्राउंड काउंट रेट अगेन डाल दो, दिस बिकम्स 205. तो बेटा मुझे बताओ 205 पे आपकी हाफ लाइफ की रीडिंग क्या आ रही है? When the count rate becomes 205, what is the reading on the time axis? ये क्या रीडिंग है? ओहो, ये क्या हो गया? What is the reading on the time axis when the count rate it is 205? अगर मैं इसको देखूं तो क्या रीडिंग आएगी? Can you realize you are going from 0 to 4 in 10 boxes? This will be 2.8. I guess 2.8 minutes है ये. Yeah, 2.8 days, sorry. The half life comes out to be 2.8 days. Simple. हाफ लाइफ किस तरह कैलकुलेट की बेटा हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि इनिशियल काउंट रेट क्या है, 390. 390 में से बैकग्राउंड काउंट रेट माइनस कर दिया, दिस बिकम्स 370. 370 को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, 185. 185 में आपने +20 फिर कर दिया, दैट इज 205. 205 पे आपने जब टाइम देखा तो दैट इज 2.8 डेज. वही आपने यहाँ पे मार्क कर दिया. सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. This marks the end of this paper. If you have any question, you can ask in the comments below.